Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear student and dear listener. I hope that you are fine. First of all, welcome to my channel Education Group. In this video, we discuss about 10th class English, unit number 5, The Rain, Barsat. Today we discuss about in this poem Rain summary. You know, summary is your part of examination. जैसा कि आपको पता है कि समरी आपके इम्तिहान की एक हिस्सा होता है जो कि हमें हर हाल में करना होता है. So let's start. It is a Punjab textbook board, Lahore, Pakistan. Hi, I am Muhammad Wasim Tawfiq. First of all, I humble request to my all listener, you subscribe my YouTube channel. If you don't subscribe, and hit the bell icon for latest update. इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ. मेरे इसी चैनल पर एजुकेशन ग्रुप पर इंशाल्लाह आइंदा मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ. इस चैनल पर आप स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर सीख करेंगे. जिसे शौक़ है या जिसे शौक़ नहीं है, यानी कि जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनएजुकेटेड है, वो भी अगर इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो मेरे इस चैनल पर इंशाल्लाह क्लासेस का आगाज़ मैं बहुत जल्द करूँगा. तो वो आपने क्लासेस नहीं मिस करनी. अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो इंशाल्लाह मैं आसान से आसान अल्फाज में आप लोगों को इंग्लिश के बारे में बताऊंगा और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा. तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप एजुकेशन ग्रुप को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. आज का टॉपिक हमारा समरी है द रेन की. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका एक सेंट्रल एरिया क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे. इसको डिस्कस करने के लिए मैंने एक अपने आई बटन पर एक लिंक सेंड किया है जो मेरी पहली वीडियो थी, इससे पहले की वीडियो थी. अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसे आप अच्छे तरीके से वॉच करें, फिर यहाँ समरी पर आएँ ताकि आपको एक कंसेप्चुअल तरीके से समझ आ सके. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. द पोइम शोज द सिंपल साइट ऑफ रेन. नज़म महज बारिश के नज़ारे को ज़ाहिर करती है. इट रिवेल्स द रिफ्रेशिंग इम्पैक्ट ऑफ नेचर अपॉन ह्यूमन सोल. ये इंसानी रूह पर फितरत के ताज़ा दम कर देने वाले असर को अयां करती है. द रेन फॉल्स ऑन द टॉप थिक लीव्स. बारिश बलाई घने पत्तों पर पड़ती है. दीज thick leaves drip the rain water drop after drop on the lower thin leaves. ये घने पत्ते निचले छदरे पत्तों पर बारिश का पानी कतरा कतरा टपकाते हैं. The top thick leaves symbolize rich people upon whom the blessing of Allah pours down like shower. बलाई घने पत्ते अमीर लोगों की अलामत है जिन पर अल्लाह ताला की नेमतें बारिश की तरह बरसती है. But these rich people prove to be very uncharitable. मगर ये अमीर लोग इंतहाई कंजूस साबित होते हैं. They give alms to the but in little amounts, just like the rich leaves that pass on the rain water drop after drop to the poor leaves.
وہ غریبوں کو مقدار میں خیرات دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح گھنے پتے چھدرے پتوں پر قطرہ قطرہ بارش کا پانی دیتے ہیں۔ The beating of the rain drops against the thick leaves of trees produces a soft music۔ گھنے پتوں پر بارش کے قطرے پڑنے سے مدھر موسیقی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو ایک سریلی سی آواز آتی ہے، ٹپ 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 ٹپ، ایسے پانی کی طرح، تو اسے شاعر ایک موسیقی کا نام دے رہا ہے۔ The poet feels happy to hear it۔ اسے سن کر شاعر خوش ہو جاتا ہے۔ After the rain stops, the sun comes out of dark clouds۔ جب بارش رک جاتی ہے تو سورج سیاہ بادلوں کی اور سے نمودار ہوتا ہے۔ It shines very bright۔ یہ آبوتاب سے چمکتا ہے۔ The drops of rain look lovely in the bright sunshine۔ چمکیلی نور آفتاب میں بارش کے قطرے دل فریب دکھائی دیتے ہیں۔ As the kind sun shine equally up on all, it is a symbol of impartiality and kindness۔ جس طرح مہربان سورج سب پر یکساں منور ہوتا ہے تو یہ غیر جانبداری اور شفقت کی علامت بن جاتا ہے۔ The worth of the poem is twofold۔ نظم دوہری اہمیت کی حاصل ہے۔ The sight of rain gives pleasure, but the inequality between the poor and the rich brings about stress۔ بارش کا منظر خوشی دیتا ہے مگر غریبوں اور امیروں میں عدم مساوات بے چینی جنم دیتی ہے۔ The deep concern for the poor and the love for nature are artfully fused in the poem۔ نظم میں غریبوں کے لیے گہری فکر اور فطرت سے محبت کو انتہائی مہارت سے یکجا کر دیا گیا ہے۔ 202 words in this summary۔ Thanks for watching and don't forget subscribe, like and comment or share۔ We meet inshallah in next class۔ Take care so much and Allah Hafiz۔